Hi students and welcome to the much awaited second part of 3 marker question. This is your social science expert Shubham Pathak and we are going to learn how to write 3 marker question for geography and economics. And how are we going to practice it? We are going to practice this through some of the most important questions that have come previous years of CBSE Class 10 board exams. So without wasting any time, let me get started with this amazing session. In today's session, as I told you, most important questions I'll be discussing. And first of all, I want you to know कि you can do it. In the previous video also, I told you 3 marker question से और 5 marker question से डरना बिल्कुल नहीं है. We can do it. There is a strategy behind it. The strategy is to write in the points. I'm very sure आपको बहुत लोगों ने बोला होगा अब तक, but ये actually this is the only and the greatest strategy about 3 marker and 5 marker question, especially in social sciences. तो points में लिखिए minimum 3 points तो आप लिख के आइए, maximum 4 या 5 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर पॉइंट्स. कितने छोटे हैं, कितने वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, उन पर डिपेंड करता है. और not more than 5 minutes you have to apply on one question. Why? Because पेपर बहुत लेंदी है, हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, right? On that note, let's go ahead and I want to tell you that if you want to practice more questions, this is the place to be. Sprint Text is launched by YouTube at Vedantu and Social Science Sprint Text takes place on Wednesday. हर Wednesday आपको एक टेस्ट पेपर मिलता है that you can download and उसका एक मॉडल सैम्पल पेपर भी मिलता है that you can go through and self check your practice, self check your growth in SST. Okay, very well. हर्ष सर का एक वीडियो इस पे आप देख सकते हैं. इसके साथ साथ जो हमारी वेदांतु की अमेजिंग फैकल्टी है, हर्ष सर, अभिषेक सर, अनुभा मैम, अंकिता मैम एंड ऑल्सो कोई रह गया क्या, ऑल्सो मी, वी आर स्टार्टिंग अ रिवाइज इंडिया कैंपेन वेयर वी वुड बी रिवाइजिंग क्लास 10 CBSE इंटायर सिलेबस विद यू विद इन 72 आवर्स. 300 से ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस होंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगी, पूरा सिलेबस हम आपके साथ रिवाइज करेंगे. सो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड गो टू वेदांतु's ऐप एंड वेबसाइट एंड लुक एट इट. ओके, अभी मैं चलती हूँ आगे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन से शुरू करती हूँ. लुक एट दिस क्वेश्चन दैट हैड कम इन 2012 एंड गॉट रिपीटेड इन 2015 एज वेल. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. एज यू कैन सी, विच इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? हाउ कैन इट बी चेक्ड? एक्सप्लेन. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन आया है और स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स के बारे में पूछ रहा है. नाउ एज यू कैन लुक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल स्टेट्स नहीं है, इनमें कुछ पार्ट सेमी एरिड या एरिड रीजन्स भी आते हैं. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि इन तीनों स्टेट्स में कॉमन क्या है आखिर, राइट? अभी चलते हैं आगे और देखते हैं आंसर की तरफ. तो हम क्या लिखेंगे कि मेन कॉजेज आर लार्ज स्केल ओवर ग्रेजिंग एंड 3 मेजर्स टू चेक इज. अब जब ग्रेजिंग हो रही है तो सबसे पहले तो आप ग्रेजिंग को कंट्रोल करोगे, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करोगे, लैंड को बांधने के लिए एफॉरेस्टेशन करोगे सो दैट सॉइल कम्स टुगेदर, राइट? तो एक पॉइंट हो गया एफॉरेस्टेशन और एक हो गया आपका ओवर ग्रेजिंग का मैनेजमेंट. इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो हैव चेक ऑन द लैंड डिग्रेडेशन मेथड बाय स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स. ये जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में स्पेशली इन स्टेट्स के लिए लिखा है दैट यू कैन स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. हमें पता है बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है तो बहुत कुछ नहीं उग पाएगा, बट थॉर्नी बुशेस हम ग्रो कर सकते हैं और उससे सॉइल को हम इकट्ठा रख सकते हैं सो दैट सॉइल इरोजन तो ना हो, राइट? सो दीज आर योर 3 पॉइंट्स. इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और वेस्ट लैंड में अगर जाएंगे तो वो उसे फर्दर डिग्रेड करेंगे. तो ये तो एक कॉमन पॉइंट है ऑल अक्रॉस द इंडिया के लिए. ओके, अभी चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? ये जो 3 स्टेजेस हैं ये आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज ही दिए हैं, इसको पॉइंट वाइज ही याद करना है, कुछ और करना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू यूज, यू डोंट इवन हैव टू पैराफ्रेज इट, इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी इन पॉइंट फॉर्म, राइट? So let's look at क्या है वो 3 points. The first point is identification and inventory of resources. भैया रिसोर्स प्लानिंग करनी है पूरी कंट्री के लिए तो उससे पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. उसके साथ साथ उनकी इन्वेंट्री करनी भी जरूरी है. वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ वेयर द रिसोर्सेज आर, हाउ मच द रिसोर्सेज आर, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, राइट? This would be done by surveying, mapping, qualitative, quantitative estimation. आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. These are some of the tactics through which you can identify your resources. अब एक बार resources identify हो गए, अब क्या करेंगे? We will evolve a planning structure. Now we know how much resource we have, where we have, in what quantity we have, in what quality we have. Now we will start on planning
of using those resources with the appropriate technology available, with the skill available, and with the institutional setup which is there in our country. अब ये दोनों चीजें हो गई हैं तो थर्ड पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट. हमेशा क्या होता है, एवरी नेशन हैज अ डेवलपमेंट प्लान इन देयर हेड, राइट? That development plan should be coherent with your resource planning also. The same is true for any kind of planning in the country. You have to make it coherent with the national planning agenda. Okay, so this is your question. Now I will move ahead and go to the chapter agriculture. Look at this question, straight question. Differentiate between the two major cropping seasons of the India. पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. 3 क्रॉपिंग सीजन है तो उसमें से 2 मेजर कौन से हैं? रबी एंड खरीफ, राइट? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिख देंगे, एनफ है, राइट? लेट्स लुक एट दोस पॉइंट्स. खरीफ इज सोन इन जून एंड जुलाई, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, खरीफ को सो करते हैं. ऑन द अदर हैंड रबी इज सोन इन द ऑनसेट ऑफ विंटर विच इज अक्टूबर डिसम्बर, राइट? खरीफ, अब फसल कब पकती है? द फसल इज हार्वेस्टेड, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर मंथ. Almost opposite, rabi crops are harvested in the April and June, which is start of summer, right? हम लिख देंगे कि obviously खरीफ मानसून में हम उगा रहे हैं तो it requires a lot of rainfall, and if rainfall is not there, you have to provide irrigation. On the other hand, rabi requires less water as compared to the खरीफ क्रॉप्स, राइट? कुछ एग्जांपल्स लिखने बहुत जरूरी है. इन द खरीफ क्रॉप यू वुड पुट पैडी, मेज, जोवार, कॉटन एक्सेट्रा. एंड इन द रबी यू कैन पुट, अच्छा 2 भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है? यू विल पुट वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एक्सेट्रा. सो ये जो टेबल है, यू कैन पॉज इट, यू कैन गो थ्रू इट बिफोर योर एग्जाम ऑल्सो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ लेट्स गो अहेड and discuss this question. This question had come in 2012 and got repeated in 16. 3 marks question again. The question asks you, name the important beverage crop introduced by the British in India. Beverage क्या होता है? Beverage is anything other than water that you drink is beverage. Now, beverage crops में से हमारे syllabus में है tea और coffee. But they're clearly asking that name the important beverage crop which was introduced by the British in the India. तो इसका आंसर है tea. फिर उसी पे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस नीडेड. ओके, लेट्स लुक एट द आंसर. टी पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टी क्रॉप के बारे में बात हो रही है. ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी सारी हैं, टी को तो सब कुछ चाहिए होता है. वेल ड्रेन्ड सॉइल, ह्यूमस भी चाहिए, क्लाइमेट भी हॉट चाहिए, ऑल्सो फ्रॉस्ट फ्री डीप एंड फर्टाइल सॉइल भी चाहिए. एंड इसके साथ साथ टी को चाहिए शावर्स विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉपिंग सीजन सो दैट टी लीव्स हमें बहुत अच्छी मिले. तो इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स मैं चाहती हूं कि आप अपने आंसर में लिख दे. 10 to 30 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है. ठीक है, अभी चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के 2 क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन 2011 एंड 16. बाय द वे चिल्ड्रन, इन जो चैप्टर्स की सेपरेट वीडियोस दैट आर अवेलेबल ऑन वेदांतु चैनल मेड बाय मी, if you'll go through that, उसमें भी previous year questions बहुत हैं. This is a comprehensive guide, yes, but the chapters also have previous year questions. By the way, I forgot to tell you this great tactic. Now that the exams are right around the corner, what you need to do is all the videos that you are going through, you need to put them on a higher speed, 1.5x या 2x speed पे आप देखो, because you just need to brush up. ठीक है, पूरा time spend करने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद कह रही हूँ. हाई स्पीड पे देखो. ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डू मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जब हम फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पढ़ते हैं तो कुछ 5 फॉर्मेशन है हमारे पास. ये क्लियरली पूछ रहा है इग्नियस और मेटामॉर्फिक की फॉर्मेशन कैसे होती है. लेट्स लुक अहेड. एनसीईआरटी में जो पहला फॉर्मेशन है रॉक का, वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक का है. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, दीज मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स in the form of deposition, right? What happens is there are cracks in the rocks. In those cracks, the mineral gets deposited, then it gets accumulated, then it gets concentrated. If those cracks are big, you will call them lode. If those cracks are small, you will call them veins. Easy peasy, simple. कौन से metal ऐसे होते हैं form? Metallic mineral like tin, copper, zinc, lead, all of these are obtained like this. Easy peasy answer. Let's go ahead. One more question. How is mining activity hazardous? Explain. Small topic of the chapter, but the question came in 2012, got repeated in 15 and again in 2016. Let's look at the answer for this.
First of all, mining activity is known as the killer industry. You will mention it one line. Killer industry बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? Following are the reasons. What reasons? Because mining से a lot of dust and noxious, यानी कि poisonous fumes are, produced while mining, and those poisonous fumes and those dust particles cause a lot of pulmonary and respiratory disorders to the miners, to the people working in the mines. One point. Second point, dumping of the waste and sludge. अब mining से जो भी dump आया, जो भी waste आया, when you dump that onto the land or into the rivers or onto the soil, no matter where you are dumping, it will cause toxicity, it will cause pollution, soil pollution, land pollution, water pollution, right? Third point, the water sources in the region get contaminated due to the mining, especially the water resources, they get contaminated, and the aquatic life living in those water bodies are also affected adversely due to mining, okay? So, iske alawa, there is one more point that I am telling you, that the roofs of the mines sometimes collapse and it leads to widespread death also, okay? So, any of those points you can write in this for 3 marks. Abhi hum, without wasting any time, we will move on to manufacturing industries. Look at this question, got repeated in 17, had come in 15 as well. The question is, describe any 3 major problems faced by the weaving and processing sectors in cotton textile industry. Now describe any 3 major problems faced by the weaving and processing sectors in the cotton. अच्छा आप बोलोगे मैम कैसे differentiate करें if this question is from history or from geography? Children, in the geography question, they haven't mentioned any 18th century or 19th century. They have simply mentioned कि cotton industry का problem बताओ. That's how you're going to differentiate. Okay. So in this question, what are we going to write? This is your model answer. That cotton industry requires, power supply. Power supply किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए होता है. Cotton industry is no different, and power supply in our country is very erratic. So that is one problem. Second problem is output of the labor is low. Labor बहुत लगी हुई है काम करने में, but their efficiency, their output is still very low. Then we don't have a lot of modern techniques, modern machines to up our game. ये भी एक problem है. Then cost and convenience of synthetic fiber. Obviously अगर consumers को मिल रहा है synthetic fiber which is much cheaper than the cotton, obviously they are going to buy that, and that hurts our cotton textile industry. So आपको बता दिया मैंने 4 point. Power supply is erratic, output of labor is low, lack of modern day techniques and machines, and also cost and convenience of synthetic fiber is hurting the industry. 4 points. अभी चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं one more question from this chapter. This question is like a superstar question. Came in 12, came in 13, 14 as well as 16. Okay. Suggest any 3 steps to minimize the environmental degradation caused by the industrial development in India. अच्छा children, I will tell you about a psychology. Social science को पढ़ने की psychology ये होती है so that we develop a temper, a rational temper for the society. इसीलिए जो questions भी आते हैं ना पेपर में, that is also to make sure that the child's temper, social temper is developed, social etiquettes are developed. इसीलिए आप देखोगे conservation और environmental protection चाहे छोटा टॉपिक हो पर उससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. अब हम कैसे करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज, उसके हमें स्टेप्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक में. दीज आर योर स्टेप्स. मिनिमाइजिंग द वाटर यूसेज एंड रीयूजिंग. इतना पानी क्यों ओवर एक्सप्लॉइट करना है? ऑल्सो वी कैन रिसाइकिल द वाटर, वी कैन इवन थिंक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. या Then generators to be fitted with silencer to reduce noise pollution. अच्छा आपके चैप्टर में इतने सारे pollutions हैं, noise, land, air, water, thermal, right? उसमें से किसी के भी targeted point आप इसमें लिख सकते हैं because they are talking about the environmental degradation. Very easy question. Then third point, smoke can be reduced by using oil or gas instead of burning coal. Again, you can mention, that water could be treated without discharging into the river, or you can say that, hot water which is discharged into the river that causes thermal pollution, usko bhi hum treat kar sakte hain. You can also mention that, honking should be banned after a certain extent. All of those are the points for environmental degradation को बचाने के लिए from the pollution. Cool? अभी चलते हैं आगे और हम बात करते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी. लुक एट दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडला सी पोर्ट. 2010, 2012, 3 मार्क्स. ओके, सारे पोर्ट्स लिखे हुए हैं. जो इसकी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की जो वीडियो है अवेलेबल, उसमें मैंने सारे पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कराए. सो गो थ्रू दैट वीडियो, मे बी ऑन स्पीड 2x, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पोर्ट. लेट्स लुक कांडला पोर्ट के बारे में. सबसे पहले यू आर गोना मेंशन दैट वेयर एग्जैक्टली इज कांडला पोर्ट. इट्स
इन कच्छ एंड इट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो हमें लिखनी जरूरी है। देन इट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक ऑन मुंबई सी पोर्ट। जो हमारा मुंबई सी पोर्ट है, जो काफी पुराना है, वहां पे इतना ट्रैफिक बढ़ गया था कि हमें कांडला पोर्ट को खोलना पड़ा। और आपको पता है गुजरात के साइड मतलब विंड एनर्जी का बड़ा स्कोप है, तो दिस इज ऑल्सो टाइडल पोर्ट। टाइड्स जो होती हैं वाटर के, सी की जो टाइड्स हैं, उनसे भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो इसे टाइडल पोर्ट कहते हैं। ऑल्सो इट केटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव गेनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर ट्रेड, बोथ द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑल ऑफ दैट से ये कांडला पोर्ट डील करता है। आप देखो ना, नॉर्थ के थोड़ा सा पार्ट है, तो नॉर्थ की सारी स्टेट से डील करता है ये। कूल। अभी चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2017. इट गिव्स यू अ स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज Airways is the most preferred mode of transport in northeastern states of India. Give any 3 region. अब इन्होंने mention ही कर दिया that you only have to mention your answer in context with the northeastern states. So first I will think about कि northeastern states का terrain क्या होता है. अच्छा, rocky होता है, hilly होता है, flood prone भी होता है, and we are talking about airways. Okay, problem solved. Those are the points that you have to mention. That presence of big rivers in the northeastern states cause difficulty in the construction of roads and railways, but airways तो ऊपर से जाता है, तो easy peasy. Then uneven surface is not suitable for the construction of roadways and railways. Again, we are talking about airways. It should be easy. Then dense forest hamper the construction of roadways and railways. If deforestation ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो we are traveling in the sky, right? So forest भी बच गए, आपका rivers भी बच गई, और आपका अनइवन सर्फेस से भी हमने डील कर लिया। फोर्थ पॉइंट, नेबरिंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एक्सेट्रा कैन बी इजीली ट्रैवल बाय द एयरवेज। हम आसपास की कंट्री में भी जा सकते हैं, इसलिए तो नॉर्थ ईस्ट में हम एयरवेज को इतना अच्छा रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर 4 points. Okay, now we are going to move on to your second subject, which is political science. Without wasting any time, I am going to start because I am on a bullet train right now. Okay, so this first chapter that we are going to talk about is power sharing. Look at this question, came in 2010, got repeated in 11, 12 as well as 13. The question asks you, describe any 3 majoritarian measures adopted by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. In this chapter, we have studied the story of Belgium and Sri Lanka, and in Sri Lanka we have studied that Sinhala language was given the status of official language, while Tamil language was not given. That is why people speaking Tamil language felt alienated, right? In that context, you have to answer this question कि कैसे, कौन से मेजर्स लिए जो मेजॉरिटी को सपोर्ट करते थे, बेसिकली सिन्हाला लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, 1956 में द सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल लैंग्वेज को नहीं बनाया। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज चलाई कि फॉर द गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज फॉर द यूनिवर्सिटीज दे स्टार्टेड प्रेफरिंग द पीपल हु स्पोक सिन्हालीज लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, देन अगेन सिन्हालीज लैंग्वेज जो लोग बोलते थे वो मेजॉरिटी नहीं, वो सारे बुद्धिस्ट होते थे, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को भी प्रेफरेंस मिलने लगी ओवर हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इन द कंट्री ऑफ श्रीलंका। सो दीज आर योर 3 points, and the result was that Tamil speaking people started asking for a separate state, Tamil Ilam, right? Okay, we will move on to the second question that came in 2011, got repeated in 12 and also in 2017. The question asks you, differentiate between horizontal and vertical division of power. Easy peasy, 3 marks ka question. I will give you 5 points for it, okay? Let's look at the answer. Horizontal division of power. Power is shared among organs of the government, 1 point. Vertical division, power is shared among the different levels of the government, 1 point. In the horizontal, you can write those 3 organs are legislature, executive and judiciary. On the other hand, in the vertical division, those levels are सेंटर लेवल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट। बट इन आवर कंट्रीज के हम 3 टियर पे पहुंच गए हैं, तो पंचायती राज भी है, राइट? This is also, vertical division is also known as federal form of government. Horizontal division in fact is not known as federal form of government. Horizontal, each organ observes each other. हमने पहले बेसिक लेवल पे ही काम जो है सेपरेट कर दिया।
On the vertical division of the power, state level, center level, district level, the lower organs work under the higher organs. थोड़ा सा यहाँ पे जो power dynamics है वो center के पास ज़्यादा होता है, state के पास कम होता है, district के पास और भी थोड़ा कम होता है, ठीक है? So these are the points that you can mention in the horizontal and the vertical division of power. अभी चलते हैं आगे फेडरलिज्म चैप्टर की तरफ. Federalism chapter में the first question that I want to discuss is very important actually. Describe the significance of decentralization. Now this is an open-ended question. आपके पास बहुत सारे points हैं, उसमें से आप कोई भी 3 points लिख सकते हैं या 4 points लिख सकते हैं. 2011 और 15 में आया था question. Let's look at the answer. It helps in the settlement of a large number of problems and issues at the local level. We are not going from top to bottom approach. We are going from bottom to top approach. अगर सारी problems bottom level पे ही solve हो जाएंगी तो top तक जाते जाते problem ही नहीं बचेगी ना. That's exactly what the first point is telling you. Second point, it provides a platform for the direct participation of the people in decision making. जहाँ पे मैं रहती हूँ, the resident, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, the place that I am the resident of, वहीं पे अगर मुझे power मिल रही है, authority मिल रही है political sphere में, so obviously I would be more participative in the democracy. Then third point, in another way, decentralization is a form of local self-government. It is the best way to realize principles of democracy. अब आप सेंटर लेवल पे कुछ भी बोलते रहिए, अब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी सोशल डिविजन्स और प्रॉब्लम्स हैं कि लोकल लेवल पे लोगों को पता ही नहीं होता कि डेमोक्रेसी क्या है. लेकिन अगर हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी एक चीज होती है जिससे लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी generate होती है and they are better able to understand the principle of democracy. On that note, let me give you one more question from the same chapter. The question had come in 2015. The question is, highlight the 3 major distinctions between the federation of coming together type and holding together type. इस question पे बच्चे मुझसे जितने doubts पूछते हैं ना, किसी question पे नहीं आते हैं. 2 तरीके की federation होती है, coming together or holding together. As you can see in the name, coming together, right? So independent states जो इससे पहले independent थी, they come together to form a federation. That is why we call it a coming together federation. On the other hand, holding together federation is when large country divides its power into small states. अब country बड़ी है, उसको समझ आया कि यार एक लेवल पे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ना डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सिस्टम, तब हमें मिलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग. ऑब्वियसली पहले वो इंडिपेंडेंट थे यार, दे वर वेरी वेरी स्ट्रांग. नाउ दे हैव यूनाइटेड, डजंट मीन दैट द पावर्स आर एनी लेस. Holding together federation में, like I told you, central government tends to have little more power than the provincial government. Holding together, by pooling sovereignty and retaining identity, they increase their security. Obviously, अब सारी independent states की सारी security power, सारी sovereignty, सारा political awareness, सारा political दिमाग, सब कुछ साथ में आके एक बड़ा firewall बनाता है of national security. On the other hand, in the holding together federation, federating units, मतलब जो छोटी छोटी units होती हैं, they have unequal power, तो वो equal level पे सिक्योरिटी में योगदान नहीं दे पाती. Then coming together federation examples are USA, examples is also Switzerland and is also Australia. Holding together में the example is India, Spain and Belgium. Okay, let's move on the third chapter, which is gender, religion and politics. Look at this question, came in 12, came in 13, came in 14 and also 15. The question is, gender division is not based on biology but on the social expectations and stereotypes. Support the statement. In the chapter which the video I have put on gender, religion and caste, I have taught you कि 2 चीजें होती हैं. Sex अलग होता है, sex is biologically determined, this is something you're born with, what genitals you're born with. But gender actually is a birth of societal expectations, right? The problem arises when gender division is considered natural and it considered inflexible, rigid मान लिया जाता है जब gender division को. So let's look at the answer. Gender division is a form of hierarchical social division based on social expectations and stereotypes. Boys and girls are brought up, first of all, they are brought up in a different way. Boys are told that they have different responsibility, girls are told they have different responsibility, right? And the main responsibility of the woman is household work, washing, cleaning, cooking, all of that, rearing children. Then
there is a sexual division of labor also. When you go out in the labor market also, there is a sexual division of labor. We see that women tend to be more teachers, women tend to be more there in the medicine field. Why? Because there is a sexual division of labor also. माना जाता है कि engineering तो लड़के ही करेंगे और nurses तो लड़कियां ही बनेंगी. मैं stereotype की बात कर रही हूँ. Exceptions are always there, children. Okay? Then majority of the women do some paid work in addition to the domestic labor, both in rural and the urban areas, but the work is not valued, does not get recognition. Even if the woman is going out in the labor market and earning, no matter in rural areas or in urban areas, क्या पता वो farm laborer हो, क्या पता वो किसी corporate में काम करती हो, लेकिन तब भी घर वापस आके घर का जो काम है वो औरतों को करना पड़ता है, and that work is never recognized, right? Housewife का work थोड़ी recognize होता है, it's not even paid. Now I will move ahead with one more question of the same chapter from the topic caste. How does caste get politicized? Give 3 points. 2010 this question was asked कि caste को कैसे politics के साथ mix करके हम politicized कर देते हैं. Each caste group tries to become bigger. Very great point. Now we know there is a majority caste, there is a minority caste, there are minority castes in our country. So what they try to do is to gain more and more political power. वो अपने आसपास वाली caste से group करके थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करती हैं. They group with their nearby caste in the hierarchy and they try to become bigger by incorporating within its neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. But देखा जाए तो traditionally hierarchy से those castes are not the same, but they try to group together. Second point, various caste groups are required to enter into a collision with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. Same point. To gain more politics, they are even ready to form a collision among themselves so that they have better recognition in the society, better negotiating power, better dialogue power. Right? Third point, इसी वजह से now there are different kind of castes that are coming forward. There are some backward castes, there are some forward castes. It's all a result because we have politicized the caste as well. Now let's move ahead and discuss two questions from the political parties. This question had come in 2012 and also 11. Look at this question. Explain merits and demerits of multi-party system. अब ये सिर्फ merits भी आ सकते हैं और demerits भी आ सकते हैं. अभी दोनों पूछे हैं 3 मार्क के लिए, तो 2-2 if you are writing in each of them. Actually no, 3-3 लिख दोगे तो बेस्ट है, तो बहुत अच्छा रहेगा. मल्टी-पार्टी सिस्टम का सबसे पहला तो you have to mention what is multi-party system. Multi-party system is where more than 2 parties have a tendency to make majority in the country, right? Now multi-party system is there in India. Talking of the merit, it allows your variety of opinion. मैं birthday dress लेने गई हूँ and they are showing me like hundreds of birthday dresses. Obviously my opinions and my options are way more than they were when I was shown 2 dresses or only 1 dress, right? So imagine it like that कि हमें बहुत choice मिलती है political sphere में. इतनी सारी parties होती हैं, उनके इतने सारे agenda और opinions होते हैं, and the choice is ours because the voting right is ours. Then people get a chance to make a smart and responsible choice between several candidates. Yes, इसके साथ साथ first point also mentions you that political parties are just a reflection of the society, right? So if there are more political parties, that means that more and more causes and agendas are making their way into the political sphere. For example, there could be a political party for just women rights. There could be a political party, stressing upon farmers' rights. There could be a political party talking about religious equality, so on and so forth. Then demerits की बात करें तो this system often becomes very messy. इतना competition हो जाता है multi party system में कि बहुत messy हो जाता है. Also the multi party system may sometimes lead to political instability. किसी एक पार्टी की majority ही नहीं आती है, then we have to form coalition government and we know coalition government में इतनी stability नहीं होती. So these are the 2 demerits. Now let's get ahead and discuss one more question. Analyze the 3 components of a political party 2014-16. Children get confused in this question. सबसे easy question है इस chapter का. 3 जो आपके components हैं वो हैं active members and leaders, active members and followers. Who are the leaders? Leader को imagine करो जो आगे वाली row में जो लोग बैठे होते हैं. So they are a part of the party. And so are the active members, but leaders are the people who are in the forefront. So every political party consists of leaders. They are old,
They are the senior members of the party. They have more authority in the party. They have more opinion, more say into the decisions. And if they win, then they perform the administrative jobs. They have higher chances of making it, of getting a ticket or forming the government. On the other hand, active members are also the members of the political party, but they are the followers who become the assistants of the leaders. मतलब leaders के पीछे पीछे छाया की तरह चलते हैं, shadow की तरह बहुत actively काम करते हैं, in a hope that maybe one day they will also upgrade themselves to become a leader of the political party. ठीक है? Third component is the followers. These are the passionate people who believe in the leaders of these political party, of the active members also, in the political party also, and they provide support. Okay, the passionate followers of the leaders who work under the guidance of the active members are known as followers. Cool. अभी चलते हैं आगे और हम पहुंचे हैं outcomes of democracy पे. Look at this first question. When is democracy considered successful? Explain. 2016 में ये question आया था. Why am I discussing this question? This is a हटके kind of question. Very important to stress upon such questions also. Okay? Why is democracy considered successful? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का कंपैरिजन दिया है. उनमें से देयर आर सम पैरामीटर्स ऑन विच डेमोक्रेसी डेफिनेटली इज वे अहेड देन द डिक्टेटरशिप. लुक एट द फर्स्ट पैरामीटर. इन द डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो हु हैज द पावर? द पीपल हैव द पावर. द इलेक्शंस आर रेगुलर. द इलेक्शंस आर सपोजिटली fair also. When elections offer a free choice and opportunity to the people and there is political equality. Economic inequality की बात नहीं हो पाती है डेमोक्रेसी में, बहुत ज़्यादा गैप होता है रिच और प्योर में, बट पॉलिटिकल इक्वालिटी डेफिनेटली सिक्योर होती है आपकी व्हाट डू यू कॉल इट डेमोक्रेसी में. इसके अलावा सोशल डाइवर्सिटीज आर ऑल्सो अकोमोडेटेड, सोशल डिफरेंसेज आर अकोमोडेटेड एंड पीपल आर ऑल्सो प्रोवाइड विद सर्टेन राइट्स दैट आर इनएलिएनेबल, जिन्हें आप एलिनेट नहीं कर सकते. हमारी कंट्री में उन राइट्स को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, चलो अभी चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से. एक और क्वेश्चन. द क्वेश्चन केम इन 2016. डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. अब डाइवर्सिटी वाले पे ही क्वेश्चन आ गया. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे यस डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी. डेमोक्रेसी डेवलप्स अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन टू रिड्यूस टेंशन, एक्सप्लोजिव और वायलेंस. एक एबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में चीज़ों को हैंडल करने की. सो व्हाट डेमोक्रेसी डज इट, फर्स्ट डेमोक्रेसी रिकग्नाइजेस कि हाँ ठीक है सोसाइटी में डिफरेंसेस है, बी इट जेंडर बेस्ड, यू नो, बी इट कास्ट बेस्ड, बी इट रिलीजन बेस्ड. Then democracy tries to accommodate them by giving extra push to the communities that need it. For example, हमारी country में caste differences बहुत थे, traditionally बहुत थे. Some castes were oppressed. So what we did it, we gave them an extra push. We did that only to make them more respected, right? More accommodating, making the society more accommodating. Same way, women rights को हम क्यों बोलते हैं women reservation bill? Why do we talk about it? Because women need an extra push in the democracy to accommodate the social inequality that is there, patriarchy, right? So that you can write. Also, you can mention the example of Belgium, that Belgium has successfully negotiated the social differences between the Dutch-speaking and the French-speaking people by making 4 constitutional amendments and given equal representation to both the languages. अब ये वीडियो हो गया है खत्म और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. चिल्ड्रन आपको गो थ्रू देम. देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो. नाउ इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक चैप्टर दैट यू वांट मी टू स्टिल गो थ्रू, you can let me know in the comment section. Don't forget to like and subscribe the video. Okay, please, you guys don't do it. And yeah, I'll see you next time with another video. 5 marks question वाला भी जल्दी आ रहा है. I've been little busy, so sorry for that. But you know how to reach me, shubham.pathak@vedantu.com, and don't forget to press the bell icon, subscribe to the channel. Okay, I'll see you next time. Bye bye. Keep smiling.